Watch Body Love from the comfort of your home only on Zee Zest YouTube channel. Click on the subscribe button and hit the bell icon now. Body Love. Healthy workouts, wholesome meals, and looks that will make you happy. चलिए अब मैं आपको लेकर चलती हूँ अपने पर्सनल जिम में। इट्स टाइम टू लिफ्ट। तो ये है हमारा पर्सनल जिम। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि इतनी सारी मशीनें देख के आपको घबराने की जरूरत नहीं है। That's something that happens to anybody. जब आप कोई भी नए जिम में जाते हैं सब डर जाते हैं। इतनी सारी मशीन देख के आपको समझ नहीं आती कि जिम में एक्चुअली करना क्या है। So don't worry. I'm going to tell you if you enter any gym, आपको कौन सी मशीन को वॉच आउट करना है, कौन सी मशीन का नाम क्या है और इस पे हम सिंपल बेसिक बिगिनर फ्रेंडली एक्सरसाइज कौन सी कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। Let me walk you through the machines. ये है स्मिथ मशीन। ऑल्सो इट्स अ केबल बार। ऐसी भी दिख सकती है या फिर सिर्फ अंदर का पार्ट दिख सकता है, ये अलग दिख सकता है। दिस इज अ कंबाइंड मशीन। ये मशीन आपको मोस्टली जिम की एंट्रेंस पे दिखेगी। लेग्स की मशीन है। इसके ऊपर होता है एक्सटेंशन। ये वाली मशीन का नाम है लेग प्रेस। दिस इज हाउ यू गोना सी इट इन द जिम। दिस वन यू कैन एक्चुअली डू हैक स्क्वाट डिपेंडिंग ऑन द मशीन। दिस इज माय पर्सनल फेवरेट मशीन। आई लव डूइंग द लेग प्रेस। तो चलिए आपको एक्सरसाइज करके दिखाते हैं। कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले हमेशा याद रखें, ऑलवेज डू अ प्रॉपर वार्म अप बिफोर यू स्टार्ट एनी एक्सरसाइज। चलिए मसल बनाते हैं। पहली एक्सरसाइज करेंगे लैट पुल डाउन्स। This is how the machine looks like. And we're going to bring it down. Keep your lower back, upper back straight and stiff. Go up full, feel the stretch and pull it down. First time कर रहे हैं तो go slow. Keep your weight slow. Keep doing up and down. If you've done this before and want a little variation, when you bring it down, pause. Up. Stretch, pause. Don't bring it lower than your chest. Right there. 15, 20, whatever you get right is good for you. And 3 to 4 sets of this exercise are good. Breathe out when you come down. 12, 13. ये एक्सरसाइज टारगेट करती है आपके लैट्स को, which is the muscle just under the armpit, spreading across and down the back. आप फोकस कर सकते हैं स्पेसिफिकली उस मसल को बिना अपने बाइसेप या ट्राइसेप को एग्जॉस्ट किए। To help with the proper posture and to ease pulling movements like opening the door or performing a pull-up, at the same time ये आपकी स्पाइन को स्टेबलाइज करती है। Always remember, when you enter the gym, don't forget that you have to go at your pace. Don't look at people and start lifting heavy. Don't forget to do a proper warm-up before you start lifting anything in the gym. Do a proper workout and go at your own pace, i.e. always make sure you go with the weights from lower to higher. Gradually build the strength and stamina. Go slow, there is no race, take it easy. दूसरी एक्सरसाइज करते हैं हम legs की leg extension. If at any point you don't understand what you want to do in the gym or you don't understand the machine, please do not hesitate to take help from any trainer or any expert in the gym. Leg extension आपके core, butt, hip and lower legs को भी strengthen करता है। ये work कर रहा है आपकी hamstring muscles. If you can also see your muscle pops out. अगर initially आपको लगे कि आपका कोई माइंड मसल कनेक्शन नहीं बन रहा है, that's perfectly okay. It takes time. इसके आप 10 से 12 रेप कर सकते हैं and 3 to 4 sets are good. If you're new to this,
Come back as soon as you reach the top. But if you can, hold it right here and then go down slowly. That's what's going to make all the difference. 17. अब हम करने जा रहे हैं हैमस्ट्रिंग कर्ल. इसके लिए मैं लेटूंगी. एवरी मशीन इज डिफरेंट. ये ऐसे प्लेस्ड है तो मैं अपने हाथ यहाँ पर रखूंगी. यहाँ पे भी रख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर हाइट. अब हम इसको कर्ल करेंगे. बहुत ही स्लोली ब्रिंग इट हियर. यू विल फील ऑल द प्रेशर ऑन योर हैमस्ट्रिंग्स. गो डाउन रियली स्लो. वापस ऊपर आएंगे एंड डाउन. वी आर गोना डू 8 to 10 reps. बिगिनर्स हैं तो बिल्कुल कम वेट रखें एंड 3 to 4 sets of this exercise are good. 4. 5. ये टारगेट करता है आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स को, जो पावर और फ्लेक्सिबिलिटी देने में आपकी लेग्स को मदद करते हैं. 7. 8. अगली एक्सरसाइज हम करेंगे लेग प्रेस. सो दिस इज हाउ यू कीप योर फीट अगर हमने क्वाड्स करने हैं. अगर आपको अपने हैमस्ट्रिंग ट्रेन करना है सेम मशीन पे तो आप अपनी लेग्स को वाइड रखेंगे और टोज को बाहर पॉइंटेड. बट वी आर ट्रेनिंग द क्वाड्स तो हम इसको इधर रख रहे हैं. फीट फ्लैट, स्ट्रेट एंड पुशिंग विद द लेग्स. And we push. Make sure when you come up, you don't have to do this. Don't lock your knees. You have to go in the motion, which is why, for a beginner, it's absolutely okay to do it without weights. Get the form correct. That's the most important thing. 4. It strengthens the power of your legs, especially the explosive power and the endurance too. आप इसके 8 से 10 रेप कर सकते हैं. That's good enough. And 3 to 4 sets of this exercise are good. मैं अपने हाथ सिर्फ सपोर्ट के लिए रख रही हूँ. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला, you are not to use your hands to push. The pressure is all going to come from your legs. The leg that does the work and not the hands. 10. Next exercise हम करने वाले हैं tricep extension. एल्बोज लॉक रखें, वेट कम रखें एंड यू पुश डाउन. इफ यू कैन, होल्ड इट अ बिट, कम अप एंड डाउन. 15, 20, whatever you can get right is good for you. Keep the weight as low you can and then work your way up for the weights. 11, 12. करेंगे 3 से 4 sets. This exercise works almost all of the upper body as it strengthens the muscles in the shoulders, chest and specifically triceps. ये हो गई हमारी आज की वर्कआउट और आज मैं बनाने जा रही हूँ something really exciting and interesting for all the vegetarians. What is that we need after a gym workout? A protein-rich diet. We've been talking a lot about it. पिछले इतने सारे एपिसोड में आपसे बार बार कहती हूँ कि प्रोटीन-rich डाइट चाहिए. हमने बहुत सारे नॉन वेजिटेरियन डिशेस बनाए भी, बट वेजिटेरियंस सफर द मोस्ट. आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ टोफू कैत्सू करी. आई एम गोना बी यूजिंग tofu instead of the paneer, but you can actually use paneer also. So let's get started. तो हम लेंगे टोफू एंड इसको हम कट करेंगे 4 पीसेस में. पैन में हम थोड़ा ऑलिव ऑयल डालेंगे. सो वी डिप द टोफू इनटू रिफाइंड फ्लावर मैदा. फिर उसके बाद आप इसको डालेंगे कोई भी प्लांट बेस्ड मिल्क के अंदर. मैंने आलमंड मिल्क यूज़ किया. और उसके बाद हम इसको डालेंगे कोई भी रेगुलर कॉर्नफ्लेक्स विच हैज़ नो शुगर टू इट. अब हम इसको डालेंगे ऑयल के अंदर. मेक श्योर दैट ऑयल इज नॉट वेरी हॉट. वी आर गोइंग टू मेक श्योर दैट ऑल द 4 sides are done properly. And this is going to go into the oven for 10 to 15 minutes. अब हम बनाएंगे ग्रेवी और उसके लिए हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे पैन में. बारीक कटा हुआ
लहसुन को बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन ना करें। एंड नाउ वी आर गोइंग टू ऐड सम अनियंस इनटू इट। अनियंस थोड़े से गोल्डन ब्राउन हो जाएं, देन वी आर गोइंग टू ऐड द कैरेट्स टू इट। एंड नाउ वी आर गोइंग टू ऐड सम स्पाइसेस इनटू इट। करी पाउडर, सॉल्ट, पेपर, थोड़ा सा मैदा डालेंगे, थोड़ी सी कोकोनट क्रीम, वेजिटेबल स्टॉक। जब इसमें कोई लम्स नहीं रहे तब हम इसको कवर करके कम से कम 5 मिनट तक पकने देंगे ताकि जो कैरेट्स हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। एंड आई थिंक इट्स रेडी। अब हम इसकी प्यूरी करेंगे। यू प्यूरी इट ओनली आफ्टर इट कूल्स डाउन। अब हम करेंगे प्लेटिंग। जैस्मिन राइस, सम सैलड, टोफू, एंड नाउ वी गोना पुट द करी ऑन टॉप ऑफ इट। तो ये तैयार हो गई है हमारी टोफू कैट्सू करी। इट्स अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन फॉर प्रोटीन, फॉर वेजिटेरियंस। Hope you all enjoyed the new episode of Body Love. Now don't forget to like, share and comment on the new video. Click on the subscribe button and hit the bell icon to get more videos from Zee Zest. Zee Zest को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा कोई नया वीडियो मिस ना हो।